Assalamu alaikum. Walaikum salam, sir. Okay, welcome to lecture 11 of Signal and Systems. So let me finish the topic regarding properties of continuous time Fourier transform. So there are some 3 or 4 properties that are remaining. So another property of continuous time Fourier transform is convolution property. According to this property, if there are 2 time domain signals, let's say x1t and its Fourier transform pair is x1, and there is another signal x2 and its Fourier transform is capital X2. Now if we perform convolution between x1 and x2, so x1t convolves with x2t. So convolution of these two will be some signal, let's call it x of t. So what is going to be the Fourier transform pair of this signal, which is the convolution of x1 and x2? According to the convolution property of continuous time Fourier transform, convolution operation in time domain is simply the multiplication of the corresponding Fourier transforms. So in time domain, we are performing convolution, and in frequency domain, we are performing multiplication. Now, if we want to prove this property, so let's say that the Fourier transform of x1t is xj omega. Okay, so capital X is the Fourier transform. So in order to find out the Fourier transform of x of t, what I will do, I will make use of the forward Fourier transform equation. So I will take this signal x of t, and then I multiply it with e power minus j omega t in integration from minus infinity to plus. Now this signal is equal to convolution between x1 and x2. So I need to replace this x of t by convolution of x1 and x2. So in place of xt, I will write x1t convolve with x2. And this thing is then multiplied with e power minus j omega t d. Now, we already know that convolution of x1 and x2, so x1t convolve with x2t, if I want to find this is the integral. It is x1 tau x2 t minus tau d of. So this operation, convolution operation between x1 and x2, it is equal to this integral. So I'm going to replace this thing with this integration. Okay, so let's move to the next slide. So Fourier transform then become equal to minus infinity to plus infinity. So this is the integral which we already have, and now this thing is going to be replaced by this. So I will
put another integration minus infinity plus infinity, and I will say x1 tau x2 t minus tau d of tau, and then we have e power minus j omega t d of t. Okay. Now I'm going to replace this t minus tau by some other variable. So let's say let t minus tau equal to some variable. You can use any other variable. Let me use lambda. So this lambda is some variable. Okay? You can use alpha, beta, whatever you like. It means t will be equal to tau plus delta. So let me now introduce this variable. So x1 tau, this will become x2 delta. D delta. In place of t, we can put tau plus delta. And then this thing will give us that dt is equal to del t lambda. So this is now t lambda. And of course, we have this another integral as well, minus infinity plus. Now I can write this particular expression as e power minus j omega tau into e power minus j omega delta. So this whole equation can be now represented like this. So x1 tau and then e power minus j omega tau d of tau, and minus infinity plus infinity x2 delta and e power minus j omega delta d delta. But if you look at this thing and this thing, this is nothing but the Fourier transform of x1. And this is the Fourier transform of x2. So what we have proved that capital X, which is the Fourier transform of x of t, it is equal to x1 j omega into x2 j omega. And this is what we mention over here. So when you convolve two signals, you get a new signal which we call x of t. And what is the Fourier transform pair of this? I call it x of j omega. And what will be x of j omega? It will be simply x1 multiplied with x2. Exactly this thing. Okay, let's move on to next property, and that is integration property. We already talked about differentiation property. So let's find out what is the difference between integration property and differentiation property.
So x of t having Fourier transform capital X function of omega. If we now take the integral of this signal in time domain, so let's say x of tau, d of tau from minus infinity to t. What will be the effect of this integration in time domain on the frequency domain representation of the signal? According to the integration property, Fourier transform will become the original Fourier transform divided by j omega plus there will be another term which will be equal to pi Fourier transform evaluated at omega equal to 0 into impulse function at omega equal to 0. Now, just to put thing in perspective, last time in our last lecture, we talk about differentiation property. So what was the behavior of differentiation property? That if x of t has a Fourier transform, capital X, and if you take the derivative of given signal, then according to the differentiation property, which we proved last time as well, it will be simply equal to j time omega into x of j omega. Now, because of the relationship between differentiation and integration, they are basically inverse operations. So in case of differentiation, we are multiplying with this factor. And when you take the integration, you see that this factor is divided, but we also have this extra term. So let's find out what is the proof of this property. Why integration of any time domain signal becomes in the frequency domain, the Fourier transform, which was x of capital X, it changes to this thing. Okay. Now, we can prove this property in a number of ways. So one of the technique that I'm going to use, and of course you can explore many other properties, it may be given in the book, or you can search the internet. This thing can be represented as, if you convolve given signal with unit step signal, x of t convolve with u of t. I'm going to prove that this operation is actually this. So there is no difference whether you represent integration by this thing or whether you say that x of t is convolved with u of t. It is one and the same thing. How I'm saying this thing? Again, this is something which we have covered in our maybe chapter 2, when we first introduced the concept of convolution for LTI systems. But maybe someone may not remember that thing. So just for revision, how you will perform this convolution? It will be simply x of tau, u of t minus tau, d of tau from minus infinity to plus infinity. This is the standard way to find the convolution between any two signals. Now, we already know about this signal. Okay? This x can be any given signal. Okay, it has infinite possibilities. But this signal, u of t, is a well-known signal. It is a unit step signal. And we already know that unit step signal, it looks like this. So graphically, if I show u of t, again, because our variable is tau, so if I want to plot u of tau, so how u of tau will look like? U of tau will be
like this. U of tau will be 0, and as tau becomes equal to 0, this will become 1, and then this is. So the signal that I have drawn is U of tau. Now, because we have minus over here, so how U of minus tau will look like? So minus tau, U of minus tau means which we are going to apply which operation? Yes, which operation? Time reversal. Time reversal. Yes, time reversal. So what will happen to the signal? Signal will Mirror image. Yes, mirror image of this. So it will be like this. And then we have this T, which is kind of a time shift. And time shift can be positive, can be negative, or it can be signal can be shifted towards the left, or it can be shifted towards right. Let's again, I'm going to consider one case, and that is, let's assume that this T is such that signal is shifted towards left. Signal is shifted towards left. So it means with respect to tau, if I plot U of T minus tau, so rather than at 0, our signal is now going to be like this. And this is the value of T. After T, it is equal to 0. So I've considered the case where signal is shifted towards left. You can also consider the case when T is such that signal is shifted towards right. So rather than 0, it will be some error. But again, we will get the same result. So now this signal, U of T minus tau, graphically, it will be like this. So when you take this signal and multiply it with x of tau, so the limits are from minus infinity to plus infinity. But we know that this signal, it is only non-zero up to small t. So it started from minus infinity. So nothing will happen to the lower limit, but upper limit, which is plus infinity, it needs to be changed because the signal that is multiplied with the given x, it is only non-zero up to this time interval, that is t. So it means the upper limit will become t. And from minus infinity to plus t, what is the value of this signal? What is the value of this signal? It is simply 1. So it means ये जो इंटीग्रेशन मैंने लिखा था, इसको अब मैं रिप्लेस कर लेता हूँ. So idea graphically मैंने देना था आपको. Let me remove this thing now. So what we have proved right now is कि x of t convolved with u of t is simply integration from minus infinity to small t x of tau d of t, which is exactly this thing. That is why मैंने कहा था कि इस चीज को हम इस तरह भी लिख सकते. Now, if they are if this integration is the same as if you are convolving x of t with u of t, so अगर हम इसका Fourier transform लें, it will be the same thing as if हम इसका Fourier transform ले रहे हैं. So let's find out कि इसका Fourier transform क्या होगा. और इसका जो भी Fourier transform होगा, that will be the same as if कि हमने इसका Fourier transform पता चल जाएगा, जो कि ये आना चाहिए. So what I'm interested in the Fourier transform of x of t convolved with u of t क्या होगा. Now already हम कौन सी property पढ़ चुके हैं? Convolution property. And according to convolution property, whenever you convolve two signals,
the Fourier transform of this convoluted signal will be simply the multiplication of Fourier transform of this into this. So it means, what will be the Fourier transform of this? It will be simply equal to Fourier transform of small x, which is this thing, and Fourier transform of this, which is, let's call it UG. Now, what we need to know is कि ये U किसके बराबर है, जो कि यूनिट स्टेप का Fourier transform. What is U? It is Fourier transform of U of t. Now, I'm not going to go into the details of the derivation of this. This is something which I advise कि आप इसको थोड़ा सा खुद ही थोड़ा सा explore करें. मैं डायरेक्ट रिजल्ट लिख रहा हूँ कि यूनिट स्टेप सिग्नल U of t का जो फोरियर ट्रांसफॉर्म पेयर है, जिसको मैं कैपिटल U से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, it is equal to 1 over j omega plus pi delta omega. ये आपने, अगेन मैं इसको प्रूफ नहीं कर रहा, आप इसको खुद ही प्रूफ कर रहे हैं. So I will say try to prove it. Once we have this information, हमारे जो फोरियर ट्रांसफॉर्म होगा वो क्या हो जाएगा, x को हमने इसके साथ मल्टीप्लाई कर. So Fourier transform of x of t convolved with u of t इसके बराबर है, it is this thing multiplied with 1 over j omega plus pi delta. So let's multiply this inside. So what we will get? We will get x divided by j omega plus pi. Now, when this thing is multiplied with this, we know that this delta function, it is non-zero only at omega equal to 0. So when this function is multiplied with this, we will get the value of this function evaluated at omega equal to 0. So यहाँ पे मैं लिखूंगा capital X evaluated at 0 into delta omega. Now, ये हमने क्या फाइंड किया है? ये हमने फाइंड कर लिया है Fourier transform of x of t convolved with u of t. But we already know that this thing is actually minus infinity to t x of tau d of tau. So ये जो result है, ये actually इस चीज का Fourier transform फाइंड कर लिया है. So this is the result. And now if you go back, जब हमने इंटीग्रेशन प्रॉपर्टी लिखी थी कि इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म क्या होगा, x of j omega divided by j omega pi x of 0 delta omega, exactly this thing जो हमने प्रूफ कर. Now moving on to the next property, and that is modulation property. Not modulation, हम already कर चुके हैं, I think. It's duality property पहले कर लेते हैं. Duality property. According to duality property, if small x of t has a Fourier transform capital X function of omega, then if we have
a signal which is capital X, this one, but now it is a function of time. So what will be the Fourier transform of this? It will be equal to 2 pi small x function of minus omega. Let's see इस प्रॉपर्टी को थोड़ा सा अंडरस्टैंड करने में शुरू में आपको प्रॉब्लम होगा, बट पहले इसको मैथमेटिकली देखते हैं और फिर मैं उसको ग्राफिकल इंटरप्रिटेशन दे रहा हूँ. इफ यू लुक एट दिस प्रॉपर्टी, व्हाट वी हैव डन इज कि एक सिग्नल है हमारे पास जिसको मैंने स्मॉल एक्स से रिप्रेजेंट किया हुआ है और वो फंक्शन ऑफ टाइम. इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म है, एक फंक्शन है जिसको मैं कैपिटल एक्स कह रहा हूँ, और ये क्योंकि फोरियर ट्रांसफॉर्म है तो नाउ इट इज गोइंग टू बी फंक्शन ऑफ ओमेगा. ड्युअलिटी प्रॉपर्टी में मैंने क्या किया है कि मैंने अब टाइम डोमेन में एक ऐसा फंक्शन कंसीडर किया है जिसको जिसकी जो शेप है वो एग्जैक्टली इसकी तरह है. दैट इज वाई इसको मैं कैपिटल एक्स से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ. तो अगर आप इन दोनों को कंपेयर करें, इन दोनों में क्या डिफरेंस है? हमने क्या किया है कि ओमेगा को हमने किससे रिप्लेस कर दिया है? टी से रिप्लेस कर. तो एक्स ऑफ ओमेगा इज नाउ एक्स ऑफ. अब इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म पेयर क्या होगा? इट विल बी दिस कांस्टेंट फैक्टर. और अगर आप इसको देखें, यहाँ पे मैं इसको शो कर रहा हूँ स्मॉल एक्स, इट मींस ये जो सिग्नल है एग्जैक्टली ये सिग्नल, बट डिफरेंस क्या है? ये सिग्नल फंक्शन ऑफ टाइम था, जबकि ये सिग्नल जो है फंक्शन ऑफ माइनस ओमेगा. तो अगर आप इन दोनों को कंपेयर करें तो हमने क्या किया है? हमने रिप्लेस किया है टी को किससे? माइनस. नाउ लेट्स फाइंड आउट कि इसको पहले प्रूफ कर लेते हैं, फिर इसको मैं ग्राफिकली इसका सिग्निफिकेंस बताऊं कि इसका क्या फायदा हो सकता है. So we have this inverse Fourier transform relationship. फर्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन में करूंगा कि रिप्लेस टी बाय माइनस टी. तो लेफ्ट साइड पे हो जाएगा एक्स ऑफ माइनस टी टी पावर माइनस जो ओमेगा टी टी. Then you can move this 2 pi factor over there. तो ये हो जाएगा 2 pi x of minus t minus infinity to plus infinity x of j omega e power minus j omega t d omega. And then you can say replace t by omega and omega by t. इस इक्वेशन में जहां पे t है वहां ओमेगा लिख देंगे और जहां पे ओमेगा है वहां पे. तो लेफ्ट साइड को अगर आप देखें, लेफ्ट साइड पे मेरे पास क्या जाएगा? I will get 2 pi x of
माइनस ओमेगा हो जाएगा। राइट साइड पे क्या होगा? राइट साइड पे हमारे पास हो जाएगा एक्स ऑफ जे टी ई पावर माइनस जे। अगेन ओमेगा को हम टी से रिप्लेस करेंगे, टी को ओमेगा से रिप्लेस करेंगे, सो इट मींस वी विल गेट द सेम थिंग। और क्योंकि हम टी को ओमेगा से रिप्लेस कर रहे हैं तो डी ओमेगा की जगह मेरे पास आ जाएगा डी ऑफ टी। नाउ इफ यू लुक एट द स्ट्रक्चर ऑफ दिस इक्वेशन, ये जो राइट साइड पे आपको नजर आ रहा है ये क्या चीज है? ये एक सिग्नल है जिसको हम कैपिटल एक्स से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और जो लेफ्ट साइड पे है ये इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म। ये किस बेस पे हम कह रहे हैं? व्हाट इज द स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ फोरियर ट्रांसफॉर्म? अगर हमने किसी सिग्नल का फोरियर ट्रांसफॉर्म फाइंड करना है, दिस इज द इक्वेशन, एक्स ऑफ टी ई पावर माइनस जे ओमेगा टी डी ऑफ टी। ये स्टैंडर्ड इक्वेशन हमारे पास। दिस इज द टाइम डोमेन सिग्नल एंड दिस इज द कॉरेस्पॉन्डिंग फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ दैट। इस वक्त इक्वेशन को अगर आप देखें, ई पावर माइनस जे ओमेगा टी डी ऑफ टी, ई पावर माइनस जे ओमेगा टी डी ऑफ टी, एंड दिस इज द फंक्शन। हमारा जो फंक्शन है या सिग्नल है वो क्या है? इट इज कैपिटल एक्स, फंक्शन ऑफ टी। और लेफ्ट साइड पे क्या चीज होगी? जिस तरह ये सिग्नल है और ये इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म है, तो ये सिग्नल है और इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म। नाउ इफ यू लुक बैक, हमने क्या कहा था? ड्यूअलिटी प्रॉपर्टी में अगर एक्स स्मॉल एक्स ऑफ टी का फोरियर ट्रांसफॉर्म कैपिटल एक्स है, तो कैपिटल एक्स ऑफ टी का फोरियर ट्रांसफॉर्म क्या होगा? इट विल बी 2 पाई एक्स ऑफ माइनस टी। एग्जैक्टली दिस। So this is the proof of this duality property. अब इसको ग्राफिकल इंटरप्रिटेशन में किस तरह दूंगा? लेट्स कंसीडर वन ऑफ द एग्जांपल जो ऑलरेडी हम कर चुके हैं, कि अगर हमारे पास सो यहाँ पे मैं टाइम डोमेन और यहाँ पे हम ओमेगा डोमेन एंड देन ओमेगा टाइम। लेट्स कंसीडर द एग्जांपल जो हम कर चुके हैं, कि अगर हमारे पास टाइम डोमेन में एक सिग्नल हो विच इज अ पल्स, लेट्स से इसका मैग्नीट्यूड 1 है और इसको मैं डिनोट कर रहा हूँ स्मॉल एक्स, और लेट्स से कि ये माइनस T12 है और ये प्लस T1। इसका जो फोरियर ट्रांसफॉर्म होगा जिसको मैं कैपिटल एक्स को, और हम ऑलरेडी इस एग्जांपल को भी कर चुके हैं, इसको हमने कहा था कि ये रेक्टेंगुलर पल्स, दिस इज रेक्टेंगुलर पल्स। इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म जो हमने देखा था कि इट वाज अ सिंक फंक्शन, पिछले लेक्चर में हम ये कर चुके। ठीक है, दिस इज अ सिंक। अब अगर आप देखें इस प्रॉपर्टी में हमने क्या किया है, जिस तरह आप देखें कि स्मॉल एक्स का फोरियर ट्रांसफॉर्म कैपिटल एक्स। अब मैंने टाइम डोमेन में एक ऐसा सिग्नल लेना है जो कि कैपिटल एक्स। इसका मतलब ये हुआ कि अब मैं इसको कैपिटल एक्स कहूंगा, लेकिन ये फंक्शन ऑफ क्या होगा? टी हो जाएगा। सो इसका मतलब है कि अब टाइम डोमेन में मेरे पास सिग्नल है जो कि सिंक फंक्शन। अब क्वेश्चन है कि फोरियर ट्रांसफॉर्म इसका क्या होगा? तो अकॉर्डिंग टू द प्रॉपर्टी, इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म क्या होगा? 2 पाई स्मॉल एक्स माइनस ओमेगा। मतलब है कि यहाँ पे जो सिग्नल होगा उसको हम कहेंगे 2 पाई के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, स्मॉल एक्स होगा, स्मॉल एक्स, दिस इज द सेम सिग्नल। इसका मतलब है कि वी विल गेट अ पल्स इन द ओमेगा डोमेन, बट साथ में माइनस ओमेगा है। नाउ क्योंकि ये रेक्टेंगुलर पल्स जो है सिमेट्रिक है, चाहे इसको आप एक्स ऑफ ओमेगा से रिप्लेस करेंगे या एक्स ऑफ माइनस ओमेगा, इसकी शेप यही रहेगी। सो इट मीन्स कि वी विल गेट अ रेक्टेंगुलर पल्स।
और 2 पाई इसका मतलब है कि अज्यूमिंग कि ये मैग्नीट्यूड 1 है, इसका मतलब है कि ये जो मैग्नीट्यूड है ये 2 पाई हो जाए. So you can see the duality of behavior over here. Let me continue with this lecture in the next session, but I will take मैं 10 minutes की break ले रहा हूँ. So I will start this Zoom meeting after 10 minutes. Okay.